Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we are going to create a personalized diet and workout recommendation system using machine learning and generative AI. So first let me show you the output. तो यहाँ पे ये आपको डाइट टाइप्स भी रिकमेंड करके देता है एंड आल्सो इट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर वर्कआउट रिकमेंडेशन, ब्रेकफास्ट आइडियाज, डिनर आइडियाज, and it also recommend additional tips. So मैं यहाँ पे एक input देता हूँ. Basically for this diet and workout planner you have to put some input features like your dietary preferences, your fitness goals, your lifestyle factors like you are active or trans daily or not active, your dietary restrictions, और आप अपने हेल्थ से रिलेटेड भी बता सकते हो. Currently I don't want to I don't have any health issue or some kind of information, so I've just put it none. And you can put your query like for the model, can you suggest a comprehensive plan that include diet and workout and all those stuffs. So the moment you click on this button, first let me refresh it so that we can see. As you can see, I have already added this information, but currently we don't have any output. So the moment I click on this get recommendation button, the system will recommend me all the options I wanted. So you can see these are the recommendation. Sometime it's, I think I have to refresh it basically. So it's refreshing. So let me add the information. तो मैंने पहले यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड किया हुआ था, मैं उसी को ट्राई करता हूँ. I just want the same record. You can add more and click on the get recommendation button. So it's in loading. So now let's see. As you can see, these are the diet recommendation like paleo diet, ketogenic diet, Mediterranean diet, zone diet, all those types of diets. And we have workout option, weightlifting, high intensity interval training, CrossFit, yoga, all these things. और ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आइडियाज भी देते हैं. यू हैव टू ईट दिस थिंग्स इन ब्रेकफास्ट and you have to this is empty, I don't know why, but sometimes it's not providing. But yeah, these are some additional information like you have to drink a lot of water, hydration, supplements and snacks. So yeah, this is the system. Now let's implement the system coding part. So मैंने PyCharm open किया है. First we need to set up our folder. So this is the folder in which we have already created the virtual environment. अब यहाँ पे आप right click कर दें and create a new directory. So for this project we are going to use Flask framework, which is useful for creating web apps. So मैं इसके लिए मुझे चाहिए templates. So मैं templates के नाम से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ. एंड आई ऑल्सो नीड अ पाइथन फाइल जिसमें मैं बैकएंड वाला कोड इम्प्लीमेंट करूँगा. सो उसको मैं नाम देता हूँ ऐप. सो नाउ वी हैव this app.py in which we will be implementing backend code, and within this template I will create HTML file in which we will be working with front-end code. Okay, so this is HTML file by the name of index. So we have this file. Okay, so मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, आपको चीज़ें जूम करके दिखा देता हूँ. So the first thing you have to do, you have to install but before that let me import from Flask, import render template and request. उसके बाद import Google generative AI as Gen AI and also import OS module. ठीक है, तो ये कुछ important module है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी. So you have to install all these modules in your terminal. So go to your terminal and there type pip, let me zoom out, pip install Flask.
क्योंकि आपको फ्लास्क इंस्टॉल करना होगा। सो चूँकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंस्टॉल गूगल generative AI. So you have to install these two libraries because we are going to use them. Now the first thing we have to implement the basic syntax of Flask. उसके लिए आप, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करना भूल गया, कैपिटल F वाला फ्लास्क, जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। सो मैं यहाँ पे आके फ्लास्क को कॉल करके इसके अंदर एक पैरामीटर होता है नेम, वो पास करता हूँ। सो दिस इज द बेसिक ऐप जो हमने क्रिएट किया। नाउ लेट्स क्रिएट पाइथन मैन। सो पाइथन मैन आप कुछ इस तरह बनाते हो कि नेम विल बी इक्वल टू अंडरस्कोर मैन, and within this python main we have to call this app. So app dot run and debugger will be true. So this is the basic syntax you will have to implement in any Flask based app. Now between this app and this man we have to implement the logic for working with our system and implementing the logic for redirecting with front end code. सो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, एक रूट बनाता हूँ और इस रूट के अंदर जाके मैं एक एम्प्टी पाथ देता हूँ। अब मैं फंक्शन बनाता हूँ इंडेक्स के नाम से, जो मुझे हेल्प करेगा कि ये मुझे रिडायरेक्ट कर दे सर्वर यानी बैकएंड से फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड पे। सो उसके लिए मैं रिटर्न करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस रेंडर टेम्पलेट फंक्शन। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ index.html पेज को। दिस शुड बी योर पाथ। ओके, मैंने एम्प्टी दिया एंड दिस शुड बी html या। So now if I go to HTML and for now just here add some dummy h1 tag like this is my diet system. So now you have to run this system from server side. So just right click, run the app, and you will get here a URL and you have to just click on this URL. सो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है index.h। ओके, मैंने अगेन स्पेलिंग मिस्टेक किया है, इट शुड बी HTML। सो मैं जाके इसको एक बार रिफ्रेश मारता हूँ। सो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, क्लियरली सी। Now the first thing we have to work with the front end. We have to design the form where we have to put all the input features like the button, and then we have to display all those information accordingly. So it's mean that we have to work on index.html first. Okay, so let's quickly do that. So index.html का जो basic syntax है वो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे आके सबसे पहले काम ये करता हूँ कि एक कंटेनर लेता हूँ और इस कंटेनर के अंदर मैं एक h2 टैग लेता हूँ और इस h2 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ पर्सनलाइज्ड डाइट एंड वर्क आउट प्लानर या रिकमेंडेशन सिस्टम। सो अब इसके बाद मुझे चाहिए एक फॉर्म जिसमें मैं यूज़र से इनपुट डिटेल लूँगा। सो उसके लिए आप HTML के अंदर फॉर्म टैग लेते हो और यहाँ पे फॉर्म के अंदर आप दो चीज़ें पास करते हो, एक्शन, इट शुड सजेस्ट मी एक्शन, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट सजेस्टिंग मी एक्शन, और एक्शन में रखता हूँ रिकमेंडेशन। ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये एक एंड पॉइंट है जो हम बैकएंड में बनाएंगे। सो मैं अभी के लिए इसको बना लेता हूँ सो दैट यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे अगेन एक रूट बनाना होगा, लेकिन इस बार पाथ में देता हूँ रिकमेंडेशन यानी वो एंड पॉइंट, और यहाँ पे आप एक मेथड्स के नाम से वेरिएबल पास करते हो या पैरामीटर जिसमें आप पोस्ट रखो। यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स अ बिट लेटर, बट अभी के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ रिकमेंडेशन, और अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। ठीक है, वापस आके index.html के अंदर द सेकंड थिंग आई विल पास विल बी मेथड like this and the method will be post.
सो जब आप फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड से बैक एंड यानी सर्वर को डेटा पास करते हो तो फिर आप पोस्ट मेथड यूज करते हो, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले डायरेक्टरी प्रेफरेंसेस के लिए इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो पहले मुझे चाहिए लेबल, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे कोई फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, जैसे लेबल लेना है। और इसके अंदर मुझे चाहिए डायरेक्टरी स्पेलिंग, आई थिंक इट्स ओके, डायरेक्टरी प्रेफरेंसेस। एंड उसके बाद मुझे एक इनपुट टैग की मदद से यहाँ पे एक फील्ड ऐड करना होगा जिसमें मैं यूज़र से इनपुट टेक्स्ट लूँगा डायरेक्टरी प्रेफरेंसेस के लिए। तो यहाँ पे टाइप को मैं टेक्स्ट रखता हूँ, और ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, इसी की मदद से आप बैकएंड में वो वैल्यू गेट करते हो जो यूज़र ने इस इनपुट फील्ड में डाला होगा। तो मैं इसको रखता हूँ डायरेक्टरी प्रेफरेंसेस। और चूंकि अगर आप प्लेस होल्डर ऐड करते हो तो इससे यूज़र को ये पता चलता है कि मैंने इस फील्ड में ऐड क्या करना है। जैसे कि एग्जाम्पल यू हैव टू राइट इन स्ट्रिंग लाइक वेजिटेरियन और हाई प्रोटीन। और चूंकि ये फील्ड रिक्वायर्ड है तो उसके लिए एक पैरामीटर है रिक्वायर्ड, वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये हो गया हमारा अपना पहला इनपुट फील्ड। अब नेक्स्ट ये है कि मैं एक और फील्ड ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे आके दूसरा इनपुट फील्ड था हमारे पास फिटनेस गोल्स, यूज़र के फिटनेस गोल क्या है। तो अगेन एक लेबल, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फिटनेस गोल्स एंड इनपुट फील्ड, और अगेन ये टेक्स्ट बेस्ड होगा। सो मैं यहाँ पे जल्दी से नेम ऐड करता हूँ क्योंकि बैकएंड में इसी ही नेम की मदद से इस इनपुट फील्ड में जो भी फिटनेस गोल वैल्यू डालेगा उसको हम गेट कर सकें। सो फिटनेस गोल्स एंड अगेन प्लेस होल्डर लाइक एग्जाम्पल की रेशियो लाइक वेट लॉस मसल गेन, और ये फील्ड भी मुझे रिक्वायर्ड है, यानी आप इसको एम्प्टी नहीं जोड़ सकते। सो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक। सो इफ आई जस्ट रिफ्रेश, so you can see we have this page, dietary preferences, field and fitness goals, but we have to design this, we have to work, we have to add css। so उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे आके css मैंने पहले से किया है वो मैं ऐड करता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हो लाइक बॉडी से पहले एक टैग होता है स्टाइल टैग। सो इसके अंदर इट्स नॉट हियर, आप बेसिकली हेड के बाद ऐड कर सकते हो, आप हेड के बाद इसको ऐड कर लें। और यहाँ पे अगर मैं बॉडी लिखूँ और फिर ये बॉडी के अंदर बॉडी अपने पेज के बॉडी को कॉल करके अभी के लिए जस्ट अगर मैं बैकग्राउंड कलर को ब्लैक रखूँ तो आप देख सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करने से आपके पेज की जो थीम्स एंड डिज़ाइनिंग है वो आप यहाँ पे CSS से हैंडल कर सकते हो। तो CSS मैंने यहाँ पे बहुत सारा किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अगर मैं CSS करा के देता तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो CSS में ये बॉडी की कुछ स्टाइलिंग है, वो जो कंटेनर लिया था ये उसकी स्टाइलिंग है, और H2 की यहाँ पे स्टाइल है, और आगे जो भी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी CSS ये है, ठीक है। सो इफ़ आई जस्ट गो एंड रीलोड द पेज, अब आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्म डिज़ाइन है क्योंकि उसको मैंने CSS से यहाँ पे हैंडल किया हुआ है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, सिंस चूँकि ये फॉर्म अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरह आप इनपुट फील्ड बनाते हैं, तो मैं पहले से बना चुका हूँ अपना पूरा का पूरा कंटेनर और वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्म, जो यहाँ पे एक्शन है आपके पास रिकमेंडेशन, एंड these are the input fields. The third input field is for lifestyle factors,
and the 4 input field is for dietary and health condition, and finally we have added a button within the form submit one जिसका मतलब है get recommendation. So let's see how it looks like. If I just refresh, so you can see here now we have all these input features. Now when someone add all input features here and click on this get recommendation button, what we have to do with the help of all these names, we have to get all these values right here within this recommendation function. So उसके लिए आपको पहले एक लॉजिक ये लगाना होगा कि if request dot method equal to post, यानी अगर क्लाइंट साइड से पोस्ट रिक्वेस्ट है तो सबसे पहले आप फॉर्म के अंदर जाए एंड गेट ऑल द वैल्यूज. लेट मी ऐड हियर अ कमेंट कलेक्ट फॉर्म डेटा. सो उसके लिए आप करते क्या हूँ, आप बेसिकली यहाँ पे आके रिक्वेस्ट जो फ्लास्क से हमने इंपोर्ट किया है उसके अंदर जाके फॉर्म को कॉल करते हूँ एंड फॉर्म के अंदर आप उस नेम को कॉल करते हो लाइक जो द फर्स्ट इनपुट फील्ड नेम वाज डाइटरी प्रेफरेंसेस और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ लाइक डाइटरी प्रेफरेंसेस लाइक दिस. दूसरा इनपुट फील्ड था हमारे पास, सो वो भी मैंने ऑलरेडी सारे किए हैं. सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. सो दिस इज ऑल द इनपुट फील्ड डाटा लाइक फ्रॉम डाइटरी प्रेफरेंस, फिटनेस गोल्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स. आई जस्ट replicated and accordingly store in variables. Now we must have a function. This is the custom function that I will define outside here. मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ custom function. डेफ फंक्शन अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ. ये वो फंक्शन है जो जनरेटिव एआई मॉडल को यूज़ करके हमें पलट के रिकमेंडेशन देगा. ठीक है. सो वंस वी गेट ऑल द इनपुट data from the form, we have to pass this input data to this function and this function will give us a JSON format containing all the recommendation. Okay. सो यहाँ पे ये डेटा अब हमने सिंस पास कर लिया, सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक राइट हियर. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट. अच्छा, इस फंक्शन की लॉजिक इस्तेमाल करने से पहले वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ सेटअप like this. You have to set your API key. So these are some built-in syntax you have to implement and here you have to pass your API. Now let me show you how you can copy this API. Go to your Chrome browser and type there mackersuite.google.com app.api. So the moment you enter this, you will be redirected to this page. ये Google Gemini का एक फ्री वर्जन मॉडल है जो आप टेक्स्ट जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो. क्लिक ऑन दिस गेट एपीआई एंड देन क्लिक ऑन दिस क्रिएट एपीआई की. यू विल क्रिएट द एपीआई की, देन क्लिक ऑन दिस एंड कॉपी दिस एपीआई की. वंस यू कॉपी देन जस्ट पेस्ट इट राइट हियर. सो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे अपना एपीआई की थोड़ी देर बाद पेस्ट करने वाला हूँ. उसके बाद ये जस्ट हमने सेटअप यहाँ पे किया है. नाउ यू हैव टू लोड द मॉडल. सो वी ऑलरेडी imported google.generative AI as gen AI. So you have to go to gen AI and there you have to call the class or method generative model and you have to pass this model. This is the model Gemini Pro, which is very efficient and very fast and it's totally free and we have store in model. Okay, अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपना API यहाँ पे सेट करता हूँ. Since we already created this function, so and we have already called this function right here और इसके पास हमारे सारे input fields भी आ रहे हैं. So we need to pass some parameters right here. So these are the parameters. Just let me quickly fix it like this. So all the parameters argument जो हमने नीचे से कॉल करते वक्त पास किए थे वो यहाँ पे हमने as a parameter get किए. Now here we have to use or this model. But all generative AI model needs custom prompt. So मैं यहाँ पे prompt के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ
जो जिसके अंदर हम अपना लॉजिक आगे इम्प्लीमेंट करेंगे. So we have to pass this prompt with these all variables to our this model. So model dot generate content. This is the function that will generate the content, and you have to pass the prompt, and it will give you results. Now this gives a lot of things, but I'm just interested in the text. So let me show you how it works. But first we have to create the prompt, which is important part for any Gen AI model. So let me add this. So मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे function को यहाँ पे paste करता हूँ. So this is the function, which is again the same function. We have this function, we have passed all the parameters, and here we have defined our prompt. This is very important. इस prompt में हमने अपने मॉडल को ये बताया है, can you suggest a comprehensive plan that include diet and workout option for better fitness for this user, and these are the user information. Then we have specifically mentioned that based on the above user dietary preferences, fitness and all those things, what you have to do, you have to recommend diet recommendation. Return a list like specific diet types suited to their preferences, workout option, meal option where we have to breakfast and dinner, and additional information. And we have already specifically mentioned that any useful snacks and supplements or hydrates tips tailored to their profile. एंड उसके बाद ये प्रॉम्प्ट हमने मॉडल को पास किया है और ये हमें पलट के देगा टेक्स्ट. ठीक है. सो रिटर्न रिस्पांस. सो होगा क्या, ये फंक्शन हमें पलट के यहाँ पे रिकमेंडेशन टेक्स्ट जनरेट करके देगा. और अभी के लिए मैं जस्ट रिटर्न करता हूँ विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट toward index.html, and I'm not going to pass anything, but yes, I am going to print this recommendation text. Let's see what happened. So I have to rerun this app. Click. So मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ the previous record. Can you please provide all recommendations as mentioned. So I clicked on this get recommendation. It's in loading. Let's see. Once it's done. So ये हो गया. अब मुझे देखना होगा कंसोल में जाके. तो मैं कंसोल पे आता हूँ. यहाँ पे you can clearly see the model is diet recommendation. This is the list for diet recommendation. Workout recommendation. This is the list for workout recommendation. Meal suggestion, breakfast, meal suggestion, yeah, breakfast and then dinner, because we have two options. Then we have additional tips. Now what we have to do, we have to extract all this information. So what we have to do, we have to do some custom logic on this variable so that we can extract all the information, and we have to display accordingly on our page. See what we have to do. Just let me make it a little this. First we have to remove like these things, white spaces. So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ right here after calling this function. So we can say split and map responses based on keywords. So I will create a variable by the name of current section और इसको मैं नन करता हूँ यानी एम्प्टी. फिर मैं एक लूप चलाऊंगा जो 1 by 1 लाइन उठाएगा. किससे? रिकमेंडेशन टेक्स्ट से. लेकिन उठाते वक्त मैं इसको स्प्लिट करता हूँ लाइन से, split by lines. So this is the first line. I am going to split this by first line. This is the second empty line, and this is the third line, fourth, up to so on. So अब इस लूप के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर लाइन के अंदर ये चीज आ रहा है या डिनर आ रहा है तो हमने कुछ कंडीशन लगाने होंगे. इफ वी हैव this thing, if we have this thing,
इन लाइन जो लूप हम चला रहे हैं, then it's mean that we have to add to our current section like die types like this. ये आपको आगे समझ आएगा कि ये लॉजिक मैं इम्प्लीमेंट क्यों कर रहा हूँ. बट अगर ऐसा नहीं है, यानी नीचे उसके बाद हमारे पास क्या था, दिस ऑप्शंस. सो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट इट राइट हियर. इफ वर्कआउट ऑप्शंस, लेकिन अगर वर्कआउट ऑप्शन है, अच्छा ये कॉलम डालना मत भूलिएगा, ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह टेक्स्ट के अंदर है एग्जैक्टली हमने उसी को फॉलो करना होगा. अगर लाइन में वर्कआउट ऑप्शंस हैं तो फिर आप करंट सेक्शन को दो सम टेक्स्ट लाइक वर्कआउट्स, और ये बाकियों के लिए भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ. सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बता दिया कि जब हमने स्प्लिट किया तो बता दिया कि अगर डाइट रिकमेंडेशन है तो करंट सेक्शन को डाइट टाइप्स दो, अगर वर्कआउट ऑप्शन है तो करंट सेक्शन को ये दो, अगर यानी जस्ट हम इसको लोअर कर रहे हैं क्योंकि आगे हम इसके हिसाब से चीज़ों को दिखाएंगे. एंड फाइनली हमने ये किया, अगर लाइन को फर्दर स्ट्रिप किया और चेक किया कि अगर करंट सेक्शन है, जो कोई करंट सेक्शन है, तब जाके ये रिकमेंडेशन वेरिएबल मैंने बनाया था आई थिंक, हाँ ये मैंने एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड कर ली जिसमें एक एम्प्टी डेटाबेस मैंने बनाया जिसमें डाइट टाइप्स, वर्कआउट्स, ब्रेकफास्ट, डिनर्स एंड एडिशनल टिप्स के अंदर एम्प्टी लिस्ट है. अब इन लिस्ट में मैं जो भी जनरेटेड टेक्स्ट है वो ऐड करता हूँ. सो मैंने फाइनली कह दिया कि लाइन और अगर करंट सेक्शन है तो रिकमेंडेशन के अंदर जाके करंट सेक्शन पे अपेंड कर दूं उस लाइन को स्ट्रिप करते हुए, यानी उस टेक्स्ट को. फिर मैंने क्या किया कि अब ये रिकमेंडेशन जो मेरे पास एक डिक्शनरी डेटाबेस है उसको पास किया index.html को. सो व्हाट इज गोइंग ऑन, जस्ट लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू. फर्स्ट वी आर गेटिंग ऑल द इनपुट डिटेल्स फ्रॉम द फॉर्म, देन वी आर पासिंग दिस input details to our recommendation function with some built-in prompt and it's give us the text, the recommendation. But in that recommendation we have a lot of things, so we have extracted and accordingly stored in recommendation database, and we are passing this recommendation database to our index.html. Now we are going to implement the main logic in our index.html. So मैं यहाँ पे आके, so this is the last part and interesting part. So I am in index.html. अब इस कंटेनर से बाहर I am going to add a result section, ठीक है. So here I am going to add another container by the name of container, और इस कंटेनर के अंदर the first thing I will do, I have to implement some Python code in HTML. So I will implement this syntax. If recommendation, यानी अगर आप देखे तो ऐप से हमने रिकमेंडेशन यहाँ पे सेंड किए थे. सो इफ रिकमेंडेशंस आर कमिंग फ्रॉम app.py, you also need to end this if. So this is some kind of Flask or Ginger template syntax. तब मेरा जो भी रिकमेंडेशन आया है वो यहाँ पे दिखाता हूँ. सो एक h2 टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ लाइक रिकमेंडेशंस, और अब मैं यहाँ पे कुछ बटन्स बनाऊंगा जिस तरह मैंने स्टार्ट में दिखाया था कि जिस भी चीज़ को आप व्यू करना चाहो तो आप जस्ट उस बटन पे क्लिक कर सकते हो. सो एक्शन बटन्स हियर, एंड यहाँ पे आप बटन के लिए एक और कंटेनर ले सकते हो लाइक div, और इसकी क्लास में रखता हूँ रिजल्ट बटन क्योंकि ये ऊपर मैंने इसकी CSS ऑलरेडी की है. Now within this result button container we have to add couple of buttons. So this is the button and there is an event on click. So जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो मैं एक
छोटा सा विंडो पॉपअप करूंगा जिसके ऊपर मैं वो रिजल्ट दिखाऊंगा। अब उसके लिए आप HTML के अंदर मॉडल यूज करता हूं, तो मैं इसको कहता हूं शो मॉडल। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट, बट ये एक शो मॉडल है जो हम थोड़ी देर बाद बनाने वाले हैं, और उस मॉडल का नाम है डाइट मॉडल, लाइक दिस। और आगे मैं इस बटन को नाम देता हूं व्यू डाइट टाइप्स। सो लेट मी रन द ऐप, लेट्स सी के ये काम कर रहा है या नहीं। सो मैं यहाँ पे ऐप को दोबारा रन करता हूँ और इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। सो लेट मी क्विकली ऐड द रिजल्ट, यस प्लीज। सो द मोमेंट आई क्लिक ऑन गेट रिकमेंडेशन, अगर यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक ना किया हो देन इट मस्ट गिव अस द बटन। So you can see view diet types, we don't have, if we click nothing happens, but yeah you can see this is the button. अब इस बटन के क्लिक पे we have to pop up a small white window in which we have to display only diet types. So मैं यहाँ पे आता हूँ, but first let me also add the other buttons. So मैं इस सेक्शन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ like this. So this is the same section, but now I have all the buttons for diet model, workout, breakfast, dinner and tips. So what we have to do outside of this D, we have to create 1 2 3 4 5 models. So उसके लिए कोड आपको implement करना होगा। The process is very simple। मैं यहाँ पे एक comment डालता हूँ। अब पहला हम बनाते हैं डाइट मॉडल। तो उसके लिए आप एक div लेते हो, बट इस बार मैं एक ID देता हूँ, और इस ID के अंदर मैं एग्जैक्टली यही नाम यूज करता हूँ। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट। एंड क्लास में देता हूँ मॉडल। ये क्लासेस एंड आईडीज में इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने CSS में इन पे स्टाइलिंग किया है, और थोड़ा मैं जावास्क्रिप्ट का कोड करूँगा, इस ID की मदद से मुझे हेल्प मिलेगी। और इस मॉडल के अंदर में जाके एक और div डालता हूँ और उसको क्लास देता हूँ मॉडल कंटेंट, लाइक मॉडल कंटेंट। अब इस मॉडल के अंदर मैं दिखाऊंगा अपना रिजल्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक स्पैन टैग यूज करता हूँ और इसको मैं क्लास देता हूँ क्लोज। ये भी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, क्योंकि जब आप पॉपअप करते हो उस विंडो को तो बाद में आप क्लोज भी करते हो। और उसके लिए मैं एक ऑन क्लिक इवेंट कॉल करता हूँ, और इस ऑन क्लिक इवेंट के अंदर मैं क्लोज मॉडल को कॉल करता हूँ। अब ये क्लोज मॉडल कहाँ से आएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट, बट या क्लोज मॉडल। एंड यहाँ पे इसके अंदर एक सिंटैक्स सेम like this one times, आपको exactly ये सिंटैक्स पास करना होगा। So पहले मैं क्रिएट करके देता हूँ, then I will show after this spam I will add h3 tag जिसमें मैं लिखूंगा diet types, और अब मैं अपना कंटेंट दिखाऊंगा एक अनऑर्डर लिस्ट में। So this is my unordered list. Now I have to run a loop. तो मुझे अगेन जिंजर टेम्पलेट का सहारा लेना होगा। For diet in recommendations, these are the recommendation we get from backend. So for diet in recommendations dot diet plans dot diet types, not plans. I'm just going to extract this thing. If I just go to my database, I'm going to extract all the details that are stored in this list. So let me copy this and I have to paste it right here. Okay, diet types. So this is the syntax of loop, and here you have to end for loop. Now within this for loop, what we have to do, we have to do list, and within list what we have to do, we have to display this diet loop wala diet,
क्योंकि हम डाइट टाइप्स 1 by 1 एलिमेंट को उठा के यहाँ पे दिखा रहे हैं. So yeah, this is the code. Now let's see. If I just click on write, I have to refresh basically. So let me quickly add a couple of information. Hi. So the moment I click on this button, so let's see. Okay, we have kuch. I think there is some kind of spelling mistake. If I go to app.py, we are passing exactly this thing. So let me copy, and here we have to pass exactly this thing like this. If recommendation, then also control V. Let me refresh. Can you provide info as mentioned? So let's see. There is a minor issue, but let's see. Okay, we are displaying, but we have to. Okay, I didn't add JavaScript. Yeah, I have to add JavaScript and the close functionality in this one, but we didn't add JavaScript. So yeah, this is the model. Now we have to replicate this model 5 times more for the other information as well. So we have all these models. Okay, this is the first model, diet model. This is the workout model and all the models. Now here I would like to add JavaScript. So उसके लिए मुझे script लिखना होगा. Now why I am going to add JavaScript? Because the reason I am going to add JavaScript, the moment I click on this button, it should pop up this in center. So यहाँ पे आपको idea होना चाहिए. We have add something. This show model. This is a JavaScript function. When we click on this button, then on this on click event, we are going to call this function. ठीक है, और ये हर एक के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं और यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास कर रहे हैं. And we are also getting then this model. So you will understand it. So मैं JavaScript के अंदर सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा and यहाँ पे लिखता हूँ show model, the same exact name, and it will get model ID. I am going to pass a parameter model ID, and this is the body. So within this body, what I can do, very simple. In JavaScript, you use document dot get element by ID, और इसको मैं पास करता हूँ अपना मॉडल का ID, and just I will change its style and its display. Display will be equal to block, so that I just want to show it. ये था show वाला function. Now let's do the same for close वाला function. So let me control C and control V. So when someone click on the close button, close model, and there what we have to do, we have to none. Then in this case just change to none. Okay, so ये मॉडल को शो करने के लिए है और ये मॉडल को क्लोज करने के लिए है. Now let's implement the last function, the logical function of JavaScript in the last part of this video. Close model when clicking outside of them, ये भी एक logic है. For example, so if this model pop up here, we are also going to close it by this button, but if someone click outside here, it must be closed or disappeared. So उसके लिए मैं window on event on click event कॉल करता हूँ और इसके ऊपर एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को मैं एक इवेंट पास करता हूँ. इफ यू डोंट नो अबाउट जावास्क्रिप्ट देन डोंट वरी, दिस इज जस्ट कस्टम लॉजिक और जस्ट हेल्पिंग कोड. अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट नाम के
और वेरिएबल का नाम होना चाहिए मॉडल, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। इस बार अगर आप HTML से कोई टैग गेट करते हो और वहाँ पे आईडी है तो अब बाय आईडी, बट अगर आपने क्लास दिया है तो फिर क्लास नेम, और वो मुझे पता है कि मॉडल है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेट, मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से। अगर C++ पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, जब तक मॉडल्स की लेंथ है, और फिर आई को इंक्रीमेंट करता हूँ। अब इसके बॉडी में यानी फॉर लूप के बॉडी के अंदर जाके मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। इफ जो भी इवेंट है, मैं थोड़ा सा हल्के करके, इवेंट आया हुआ है हमारे पास, उसके अंदर एक दिस फंक्शंस आर बिल्ट इन टारगेट, अगर ये इक्वल टू जो मॉडल्स हमने उठाए हैं इस ith इंडेक्स पे, तो फिर आप इस इफ के बॉडी के अंदर जाके वो काम करें जो हम करना चाहते हैं, और हमारा काम है कि उसको डिसअपीयर करे, यानी कि आउटसाइड ऑफ द क्लोज बटन आर समवेयर इन द विंडो, इफ समवन क्लिक देन वी आल्सो वांट टू क्लोज द मॉडल। सो मॉडल्स ith पे जाके इसकी जो स्टाइल है और उसका जो डिस्प्ले है उसको आप नन कर दें। होप यू गेट द आइडिया। लेट मी क्विकली शो यू। सो मैं यहाँ पे आके इसको एक बार जल्दी से रिफ्रेश करता हूँ एंड देन आई शो। अच्छा, आप और इनपुट भी ट्राई कर लेना, क्योंकि ये 0% गलती यहाँ पे देता है, क्योंकि ये एक जनरेटिव AI बेस्ड मॉडल है। सो अभी के लिए मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए और टाइपिंग से बचने के लिए यहाँ पे जल्दी से चीजें, कैन यू प्लीज सजेस्ट a diet and workout plan. So now if I click on this get recommendation button, it's in loading. Now let's see. So it's empty, it's also empty. As you can see, I can close it, but if I click somewhere outside of this model or somewhere in the window, it will also close. These results are empty. Sometime it happens, I don't know why, but let's try. This is the issue with the model, I think. Can you suggest more information about as mentioned? So as you can see, we are getting diet types. Actually sometimes skip करता है, I think model कभी कभी इनको skip करता है, I don't know why, but yeah, you can see these are the workout options, these are the dinner, these are additional tips, these are breakfast. It's empty, but you can see this is the system and this is totally real based. You can implement this application in your any type of problem solving. You can use it for educational purposes, for your projects. So yeah, it was the project.